ॐ श्रीललिता परमेश्वरी देवी सहस्रनामस्तोत्रं नाममहात्वं पूर्वभागमु श्रीविद्यां जगतां दात्रीं स्वर्गस्थितिलयेश्वरीं नमामि ललितां नित्यां महात्रिपुरसुन्दरीम्। अगस्त्य उवाच अश्वानन महाबुद्धे सर्वशास्त्रविशारदा कथितं ललिता देव्याश्चरितं परमाद्भुतं पूर्वं प्रादुर्भवो मातु ततः पट्टाभिषेचनं बण्डासुरवधश्चैव विस्तरेण त्वयोदिता वर्णितं श्रीपुरं चापि महाविभव विस्तरं श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्या महिमा वर्णितस्तदा षोडान्यासादयो देव्या न्यासखण्डे प्रकीर्तिता अन्तर्यागक्रमश्चैव बहिर्यागक्रमस्तदा महायागक्रमश्चापि पूजाखण्डे समीरित पुनश्चरणखण्डे तु जपलक्षणमीरितम् होमखण्डे त्वया प्रोक्ता होमद्रव्यविधिक्रम चक्रराजस्य विद्याया श्रीदेव्या देशिकान्मनो रहस्यखण्डे तादात्म्यं परस्परमुदीरितं स्तोत्रखण्डे बहुविधास्तु तयः परिकीर्तिता मन्त्रिणी दण्डिनी देव्यो प्रोक्ते नाम सहस्रके न तु श्रीललिता देव्या प्रोक्तं नाम सहस्रकं तत्र मे संशयो जातो हयग्रीव दयानिधे किं वा त्वया विस्मृतं तत् ज्ञात्वा वा समुपेक्षितम् मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नाम सहस्रकं किमर्थं भवता नोक्तं तत्र मे कारणं वद सूत उवाच इति पृष्टो हयग्रीवो मुनिना कुम्भजन्मना प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं कुम्भसम्भवम् श्रीहयग्रीव उवाच लोपामुद्रापते गस्त्य सावधानमनः स्मृणु नाम्नां सहस्रं यन्नोक्तं कारणं तद्वदामि ते रहस्यमिति मत्वाहं नोक्तवान् तेन चान्यदा पुनश्च पृच्छते भक्त्या तस्मात् तत्ते वदाम्यहं ब्रूयाच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिक भवता न प्रदेयं स्यादभक्ताय कदाचन न शटाय न दुष्टाय न विश्वासाय तर्हि चित् श्रीमातृभक्तियुक्ताय श्रीविद्याराजवेदिने उपासकाय शुद्धाय देयं नाम सहस्रकं यानि नाम सहस्राणि सद्यसिद्धिप्रदानि वै तन्त्रेषु ललिता देव्यास्तेषु
मुख्यमिदं मुने श्रीविद्यैवातु मन्त्राणां तत्र कादिर्यदा परा पुराणां श्रीपुरमिव शक्तीनां ललिता यदा श्रीविद्योपासकानां च यदा देवं परशिव तदा नाम सहस्रेषु परमेतत्प्रकीर्तितं यदस्य पठना देवी प्रीयते ललिताम्बिका अन्यनाम सहस्रस्य पाठान्न प्रीयते तदा श्रीमातुः प्रीतत् तस्मादनिशं कीर्तयेदिदम् बिल्वपत्रैश्चक्रराजेयोच्चयेल्ललिताम्बिकाम् पद्मैर्वा तुलसीपत्रैरेभिर्नाम सहस्रकैः सज्जः प्रसादं कुरुते तस्य सिंहासनेश्वरी चक्रादिराजमभ्यर्च्य जप्त्या पञ्चदशाक्षरीं जपान्ते कीर्तये नित्यमिदं नाम सहस्रकं जपपूजाद्यस्यक्तश्चेत्पटे नाम सहस्रकं साङ्गार्चने साङ्गजपे यत्फलं तदवाप्नुयात् उपासने स्तुतिरस्या पठेदभ्युदयो हि स इदं नाम सहस्रं तु कीर्तयेन्नित्यकर्मवत् चक्रराजार्चनं देव्या जपो नाम्नां च कीर्तनं भक्तस्य कृत्यमेतावदन्यदभ्युदयं विदुः भक्तस्यावश्यकमिदं नाम सहस्रकीर्तनं तत्र हेतुं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं कुम्भसम्भवा पुरश्रीललिता देवी भक्तानां हितकाम्यया वाग्देवी वसिनी मुख्या समाहु येदमब्रवीत् वाग्देवता वसिन्याजा स्मृणुध्वं वचनं मम भव्यतो मत्प्रसादेन प्रोल्लसद्वाग्विभूतय मद्भक्तानां वाग्विभूतिप्रदाने विनियोजिता मच्चक्रस्य रहस्यज्ञा मम नाम परायणा मम स्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञापयामि कुरुध्वमङ्कितं स्तोत्रं मम नाम सहस्रकैः येन भक्तैः स्तुताया मे सज्जः प्रीतिः परा भवेत् इत्याज्ञप्तावचो देव्या ललिताम्बया रहस्यैर्नामभिर्देव्यश्चक्रुः स्तोत्रमनुत्तमं रहस्यनाम सहस्रमिति द्विश्रुतं परं ततः कदाचित् सदसि स्थित्वा सिंहासनेऽम्बिका स्वसेवावसरं प्रादात् सर्वेषां कुम्भसम्भवां सेवार्धमागतास्तत्र ब्रह्माणि ब्रह्मकोटय लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः समुपागत गौरीकोटिसमेतानां रुद्राणामपि कोटय मन्त्रिणी दण्डिनी मुख्या सेवार्धं च समागत
शक्तयो विविधाकारास्तेषां संख्या न विद्यते दिव्यौगा मानवौगाश्च सिद्धौगाश्च समागता तत्र श्रीललिता देवी सर्वेषां दर्शनं ददौ तेषु दृष्ट्वोऽविष्टेगन्वे स्थाने यदा क्रमं तत्र श्रीललिता देवी कटाक्षक्षेपचोदिता उत्थाय वसिनी मुख्या बद्धाञ्जलि पुटास्तदा अस्तु वन्नाम सहस्रै स्वकृतै ललिताम्बिकां श्रुत्वा स्तवं प्रसन्ना भूल्ललिता परमेश्वरी ते सर्वे विस्मयं जग्मुर्ये तत्र सदसि स्थिता ततः प्रोवाच ललिता सदस्या देवतागणां ममाज्ञयैव वाग्देव्यश्चक्रुस्पोत्रमनुत्तमम् अंकितं नाम विद्धिनैर्मम प्रीतिविदायकै ता शृणुध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मत्प्रीतिवृद्धये प्रवर्तयध्वं भक्तेषु मम नाम सहस्रकम् इदं नाम सहस्रं मेयो भक्त पठते सकृत् समे प्रियतमो ज्ञेयस्तस्मै कामान् ददाम्यहं श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्या पञ्चदशाक्षरीं पश्चान्नाम सहस्रं मे कीर्तयेन्मम तुष्टये मामर्चयतु वा विद्यां जपतु वा न वा कीर्तयेन्नाम सहस्रमिदं मत्प्रीतये सदा मत्प्रीत्या सकलान् कामान् लभते नात्र संशया तस्मान्नाम सहस्रं मे कीर्तयध्वं सदादरात् श्रीहयग्रीव उवाच इति श्रीललिते स्यानि शास्ति देवान् सहानुगान् तदाज्ञाया तदारभ्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा शक्तयो मन्त्रिणी मुख्या इदं नाम सहस्रकं पठन्ति भक्त्या सततं ललिता परितुष्टये तस्मादवश्यं भक्तेन कीर्तनीयमिदं मुने आवश्यकत्वे हेतुस्ते माया प्रोक्तो मुनीश्वरा इदानीं नाम सहस्रं वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे हयग्रीवागस्त्य संवादे ललितासहस्रनामस्तोत्र पूर्वभागो नाम प्रथमोऽध्यायः।